Good afternoon all dear students. Today I am going to teach you lesson number 15, life processing in living organism. Topic to be covered in these lessons are transportation in plants, excretions and coordinations. Okay. Uh, Student, there is a questions, how do the digestive systems and the respiratory system works? Before starting this lesson, we have to solve the answer of these questions. So students, the answer of this question is digestive system convert the complex food stuff into simple soluble and absorbable nutrient with the help of enzyme. एंजाइम के हेल्प से क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ को क्या करती है, सिंपल सोल्यूबल और एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है. Soluble nutrients are supplied to each cells with the help of blood. The lungs, which are important organ in respiratory system. lungs जो होते हैं वो important organ होते हैं respiratory system में. ठीक है. is the place where oxygen diffusion in the blood. इसमें oxygen diffuse होता है blood में. This oxygen is also supplied to every cell with the help of blood circulation. ये जो oxygen है वो पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है. एंड बोथ द डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शंस आर इज कोऑर्डिनेशंस विथ ईच अदर. ये दोनों का फंक्शन कोऑर्डिनेशन से चलता है. तो देखो, वी हैव स्टडीज हाउ डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन इनहेल बाय लंग्स इन ट्रांसपोर्ट टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. The farmer also tries to transport the water from well or dam through the main canal to every plant. The food absorbed by the digestive system is converted into energy. This energy and oxygens are both transported via blood throughout the body. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? द ट्रांसपोर्टेशन, by the process of transportation a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another. एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे क्या होता है, वो जो सिंथेसिस हुआ सब्सटेंस होता है, नहीं तो एब्जॉर्ब किया हुआ सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, पास होता है. तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. So students, there are two questions you have to discuss. Why do we eat fruits and vegetable? Do the plant also need minerals like we do? तो देखो, हम जो फ्रूट्स होते हैं और जो कुछ वेजिटेबल्स होंगे तो वो क्यों खाते हैं, और प्लांट को भी ऐसी ज़रूरत होती है क्या? So the answer of this question is, in order to obtain vitamins and mineral, we take fruits and mineral in our diet. ठीक है. They also provide us with roughage. Plant also need minerals just like we do. Nitrogen, phosphorus and potassium are very important mineral for the growth of plant. तो जैसे हमें फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से हमें विटामिन्स मिनरल मिलते हैं, वैसे प्लांट को भी उनकी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की. ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अदर दैन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो प्लांट ऑब्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सॉइल एंड सम प्लांट विच आर heterotrophic obtain it by devouring insect. ठीक है, devouring insect. तो देखो, most animal move from place to place but plant do not. हर एक एनिमल एक प्लेस से दूसरी जगह क्या होता है, मूव होता है, लेकिन प्लांट नहीं होते. देयर आर मेनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी. दे नीड लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल. प्लांट नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, etc. Soil is the nearest and richest source of this substance. Root of plant absorb this substance from the soil and transport them. There are specific types of tissues to perform this function. The xylem conduct the water whereas the phloem conduct the food. All part of plant are connected with this conducting tissues. ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, प्लांट में वाटर पास होता है
और ये जो पार्ट होते हैं प्लांट के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं टिश्यू से, और ये क्या हो जाते हैं, इसके थ्रू उनमें वाटर और फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन, स्टूडेंट यूज योर ब्रेन पावर, विच टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर जाइलेम्स एंड फ्लोएम. तो ये कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, जाइलेम एंड फ्लोएम आर द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट. दे आर कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टिश्यूज ऑफ द प्लांट. ये कॉम्प्लेक्स और परमानेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट के. ठीक है. नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट. तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का प्लांट में वो कैसे होता है, तो रूट प्रेशर देखते हैं. देयर इज अ डायग्राम ऑफ रूट प्रेशर, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस डायग्राम. रूट प्रेशर क्या होता है, टेक ए स्मॉल प्लांट लाइक बाल्सम्स और tuberose with its root intact. Wash and clean its root as shown in the figure 15.1. Keep it in water containing a stain like safranine or eosines. Observe the stem and the vein of the leaves after 2 to 3 hours. 2 और 3 आवर्स के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. अभी देखो, ऑब्जर्व के बाद टेक ट्रांसफर्ड सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व द स्टेन जाइलेम अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आप अगर आपको जाइलेम देखना है तो आपको क्या करना है, जो जाइलेम है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपको प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन लेकर वो जाइलेम आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. इससे क्या होगा, इससे आपको वो जाइलेम का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा. ठीक है. अभी ये जाइलेम का स्ट्रक्चर इधर दिया है. ठीक है. एब्जॉर्प्शन विथ द हेल्प ऑफ रूट इधर दिया है. रूट सेल्स आर इन द कॉन्टैक्ट विथ द वाटर एंड मिनरल्स in the soil. Water and mineral enter the cell on the root surface due to different in concentration. As a result, these cells become turgid. This turgid cell exert pressure on the adjacent cell. This is called root pressure. ठीक है. तो ये इनको ही हम क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर बोलेंगे, जिसकी वजह से रूट जो होता है, रूट सेल का जो कांटेक्ट होता है वो वाटर एंड मिनरल, सॉइल के वाटर और मिनरल से आता है, और वाटर एंड मिनरल जो होते हैं वो सेल में एंटर हो जाते हैं रूट सरफेस ड्यू टू डिफरेंट इन कॉन्सेंट्रेशन. एज अ रिजल्ट दिस सेल बिकम टर्जिड, वो टर्जिड बन जाती है, और टर्जिड सेल्स जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द एडजेसेंट सेल. दिस इज कॉल्ड द रूट प्रेशर. Under the effect of this pressure, water and mineral reach the xylem of the root, and to reduce this difference in concentration, they are continuously pushed forward. As a result of this continuous movement, a water column is formed, which is continuously pushed ahead. This pressure is sufficient to lift the water up in shrubs, small plants and small trees. Okay. नाउ ट्रांसपिरेशन पुल. अभी ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, कैन यू रिकॉल, प्रीवियसली यू हैव परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्विंग द ब्रांच कवरिंग इन प्लास्टिक बैग. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन दैट एक्टिविटी. देखो इधर ट्रांसपिरेशन थ्रू ल्यूज के थ्रू कैसा ट्रांसपिरेशन होता है, जो मिनरल्स और वाटर दिए हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम के थ्रू. देखो सेकेंड, इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है, स्टोमेटल ओपनिंग है उधर. ठीक है. ये ल्यूज है, पूरा सेक्शन उधर दिया है कैसे ट्रांसफर होता है. Plant gives out water in the form of vapor through the stomata on their leaves through cell called guard cell. जो guard cell होती है, 2 guard cells are present around the stomata. जो stomata होता है उसके अराउंड 2 guard cells होती है. These cells control the opening and closing of stomata. Transpiration occurs through this stomata. Water is released into the atmosphere by leaves through the process of evaporation. As a result, water level is in the epithelial layer of the leaves decrease. Water is brought up to the leaves through the xylem so as to
compensate for the lost water. Transpiration help in absorption of water and mineral and distribution to all part of plant, whereas root pressure perform the important role of pushing the water up ड्यूरिंग द नाइट टाइम. तो ये कैसे ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का लीव्स के थ्रू, उससे रिलेटेड हम एक वीडियो देखेंगे. Transpiration in plants. All plants from the smallest weed to the tallest tree, which is several meters tall, need water. Plants are not mobile. How do they manage to get water right up to the tallest branch? The roots of plants absorb water and mineral salts from the soil through the root hairs by the process of osmosis. Only a small percentage of this water is used by the plant. The rest gets evaporated from the surface of leaves. This evaporation of water from the plant is called transpiration. Let us perform a simple experiment to show that transpiration takes place in plants. Take a medium-sized, well-watered potted plant. Cover it with a transparent polythene bag A and tie its mouth at the base of the stem. Next to the potted plant, place an empty polythene bag B with its mouth tied. Expose this setup to sunlight for an hour or two. Drops of water will appear on the inner side of the bag A. The polythene bag B will not show any water drops in it. The leaves give off water vapor, and due to condensation of the water vapor, tiny drops of water get collected. This experiment shows that plants give out water to the atmosphere through transpiration. There are 3 types of transpiration depending on the site of transpiration. They are stomatal transpiration, lenticular transpiration, and cuticular transpiration. Stomatal transpiration. Stomata are openings on the leaf surface through which transpiration takes place. The stomata are surrounded by guard cells which help the stomata to open and close. Lenticular transpiration. Lenticels are minute openings on the stem, and a small amount of water is evaporated through them. Lenticels are less in number compared to the stomata. Cuticular transpiration. This is the transpiration which takes place from the leaf surface. Leaves are covered by a waxy layer of cuticle. The cuticle actually helps the leaf to reduce the amount of transpiration taking place. Water is absorbed by the root of a plant. The tiny root hairs help in absorption. The water is then conducted to the upper parts of the plant through the xylem. The xylem cells have thick walls and can be compared to the pipes carrying water from the underground tank to all parts of the house. The mesophyll cells in the leaf have large intercellular spaces between them. The evaporated water vapor collects here and goes out through the stomata, which open and close periodically. Water is also evaporated from the surface of the leaf through the cuticle. When the water from the outermost layer gets evaporated, it absorbs water from the layer of cells below it, and this process creates a pull by which water gets pulled up through the xylem. Transpiration is very important to plants, as the transpiration pull helps in water rising to the leaves against the force of gravity. This activity will show us that both surfaces of the leaf do not transpire at the same rate. We use cobalt chloride paper to test for the presence of water. Cobalt chloride paper, which is normally blue, turns pink when it comes in contact with water.
Take 2 strips of cobalt chloride paper and place them on either surface of one of the leaves of a potted plant. Cover them with a glass slide and hold them in place with elastic bands. Leave it for an hour. Now remove the strips and observe them closely. What do you see? The strip placed on the lower surface turns more pink than that on the upper surface. This shows that transpiration is more on the undersurface than on the upper surface. Do you know the reason for this? The upper surface gets more sunlight, and the plant would lose most of its water if the number of stomata on both the surfaces were the same. Though transpiration is essential for plants, they also adapt themselves to minimize the water loss through transpiration. This was our today's lecture, students. I hope you understood each and every concept. Thank you. Bye bye.